Good evening, friends. Uh, Welcome to all the users of BabyChakra. This is Dr. Dipti Verlekar. Uh, I'm I have done my M.D Homeopathy. I'm a consulting homeopath and a family physician. I've been practicing in Mumbai, Andheri area since 7 years, and I've currently started my practice in Goa. Um, while treating different kind of patients, we deal with different kind of diseases and different personalities while we deal with homeopathic treatment. And the best season to treat and the variety of diseases that we see in a practice is the monsoon season. ये बारिश का सीजन होता ही ऐसा है कि हमको राहत देता है इतनी गर्मी से एंड उतने ही वो बीमारियां इनवाइट भी करता है. बारिश एक किसे पसंद नहीं है. एवरीबडी जस्ट लाइक्स रेन्स. एवरीबडी जस्ट लाइक्स गोइंग आउट, गेटिंग वेट इन द रेन और getting wet in the rain or just admiring the beautiful weather or the beautiful nature. And the kids, बच्चे भी जाके पानी में खेलना पसंद करते हैं ये मौसम में, या तो उनको बारिश में बाहर जाके भीगना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है. लेकिन इतने सारे बारिश के सीजन में जो भी अच्छी चीजें हैं बारिश की, उतनी ही हमारे लिए नुकसानदायक भी बारिश का सीजन होता है. But with all these rains, we welcome a lot of diseases and viruses also, जो हमारे सिस्टम में हम इनवाइट करते हैं उनको. एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर हेल्थ, अगर हमारा हेल्थ एक प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो हम ये सारे वायरसेस को प्रोन हो जाते हैं एंड वी टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ डिजीजेस. Okay, and that results into a different kind of sicknesses. जैसे ही बारिश का सीजन चालू होता है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके आने लगते हैं कि मेरे बच्चे को सर्दी खांसी हो गई, या वो बहुत ज़्यादा खांस रहा है, या उसको बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है. या ना केवल बच्चे, but in all age groups we see all these symptoms coming on. जैसे ही बारिश का सीजन स्टार्ट हुआ तो we see all these different kind of symptoms coming up in every other individual. ओके, बेसिकली क्या होता है, अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम रहता है बॉडी का, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो जो भी अलग अलग टाइप के वेदर्स रहते हैं या मौसम आते हैं या क्लाइमेटिक चेंज आता है, तो our body starts adapting to that kind of environment, and it helps in dealing the different viruses or the bacteria that the environment produces during that kind of season. But if your immune system is very low, or if your defense mechanism is not that very strong, you tend to attract all these kind of viruses and bacteria into your system, and these lead into different kind of diseases. ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा कि कोल्ड एंड कॉफ ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, ये आई होप सबका ही प्रॉब्लम का एरिया है. तो आप प्लीज़ आपके जो भी मेरे लिसनर्स हैं, आपको जो भी ड्यूरिंग द सेशन जो भी क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में या कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी ये पूरे लाइव सेशन के दौरान कि मैं सबके क्वेश्चंस को आंसर दे सकूं. ओके, जैसे ही मॉनसून सीजन आता है, सब लोगों का एक विजिट तो डॉक्टर के पास होने लग जाता है. स्पेशली अगर बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई तो मैक्सिमम इलनेसेस बढ़ जाती है एंड मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है. सो अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते हो और वो बीमारी के बारे में इन्फॉर्म नहीं रहते हो, आप you will tend to catch up all these kind of different illnesses that come up during the monsoon season. Okay, now as we talk about the basic
द बेसिक सिम्टम्स दैट ये बारिश जो पैदा करता है, जैसे कोई बाहर गया, बारिश में भीग गए, या तो फर्स्ट ट्रेन में उनको बहुत पसंद है भीगना, या तो इतनी बारिश के सीज़न में कुछ ठंडा पी लिया, या आप जैसे थोड़े शहरों में पानी भर जाता है, वाटर स्टैग्नेट होने लगता है, अगर आप वो पानी में फंसे हो, उसके बाद इमीडिएटली सब पेशेंट्स को ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने लगते हैं, जैसे नाक बहना, सर दर्द होना, एक माइल्ड टू हाई फीवर आना. Okay, this is called as the common cold. Okay, कॉमन कोल्ड रहता है. ये कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो बारिश के सीजन में होता है. इसका ऑनसेट बोलते हैं कि सडनली आप बारिश में भीग गए, नेक्स्ट डे आप बीमार पड़ गए. तो इसका ऑनसेट बहुत सडन होता है. एंड ये स्टार्ट कैसे होता है कि आपको नेजल कंजेशन होने लगता है, नाक बहने लगेगा, या तो पानी बहेगा, या तो ऐसे थिक डिस्चार्जेस आपके नाक से जाने लगेंगे. गले में थोड़ी एक खराश रहेगी, थोड़ी खांसी रहेगी, और बहुत ही मामूली आपको फीवरिश फीलिंग आने लगेगा, आपका बदन दर्द होने लगेगा, माइल्ड हेडेक होगा, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होने लगेगा, मतलब आपको नाक से गले में बहने वाली सर्दी महसूस होने लगेगी, और कभी-कभी स्नीजिंग भी हो सकता है. अभी ये फैलता कैसा है, कॉमन कोल्ड, हाउ इज इट स्प्रेड? द स्प्रेड कैसे होता है, अगर किसी को सर्दी खांसी है तो अगर एयरबॉर्न, सो फर्स्ट मोड ऑफ स्प्रेड इज द एयरबॉर्न. तो एयरबॉर्न कैसे, अगर किसी को सर्दी खांसी है और आप वहाँ पे आप वही उसी के आसपास मौजूद है, तो अगर वो छींके, अगर वो खांसे, तो वो वायरसेस आपके सिस्टम में चले जाते हैं. एंड अगर आपका सिस्टम वीक है तो आप प्रोन हो जाते हैं कॉमन कोल्ड को. सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द स्किन. अगर किसी को सर्दी खांसी है जिससे उसने अपने नाक कवर किया है, वही हाथ से अगर वो किसी को शेक हैंड कर रहा है या किसी को हग कर रहा है तो वो स्प्रेड हो सकता है. थर्ड इज द सलाइवा. अगर किसी को जाके स्पेशली सारे अडल्ट्स को जिनको भी सर्दी खांसी है, प्लीज़ बच्चों के पास ना जाए, बिकॉज अगर आपको मामूली भी सर्दी है और आप जाके अगर बच्चे को किस करेंगे तो क्या होता है, बिकॉज बच्चे का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी लो होता है, तो बच्चे को भी सर्दी होने लगेगी. एंड सेकेंड इज द, और अगर आपको सर्दी है, अगर आप कुछ पी रहे हो, अगर आप शेयर भी करते हो तो भी ये स्प्रेड होने लगेगा. एंड थर्ड इज टचिंग कंटेमिनेटेड water or food stuffs. Okay, now ये common cold spreads very easily. बहुत ही वायरल होता है. अगर एक ऑफिस में अगर एक कोई इंसान को सर्दी हो गई है या ये कॉमन कोल्ड की शिकायत हो गई है, वो और 5 लोगों को ये तकलीफें होगी, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है. ये बहुत कम दिन तक रहता है. It lasts only for 7 to 10 days, and if you take a proper treatment, if you take proper rest, keep yourself well hydrated, this common cold can be treated very easily. Okay, so the other diseases which are common during the monsoon season is the viral fever, और में सर्दी खांसी, different viral infections like निमोनिया होता है, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. बिकॉज क्या होता है कि रेनी सीजन में जैसे बाहर का मौसम बहुत डैम्प या ह्यूमिड होता है, सो ये परफेक्ट वेदर रहता है वायरस या बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए और उसके स्प्रेड के लिए. So because this environment is so favorable for all the viruses to increase in their number and to spread, that's why majority of the illnesses are spread during the monsoon season. Next, we will talk about, as we've already spoken about common cold जो सबकी शिकायत होती है. नेक्स्ट कॉमन इलनेस जो हम लोग देखते हैं ये मौसम के सीजन में, वो है साइनस का प्रॉब्लम. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को साइनस की शिकायत होगी. साइनोसाइटिस क्या रहता है? ये कंडीशन कैविटीज का रहता है. हमारे चेहरे में अलग अलग टाइप के कैविटीज रहते हैं. इसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस. ओके,
frontal sinus, maxillary sinus, and you have ethmoidal sinus. ओके यहाँ पे तो अगर आप बारिश में भीग रहे हो, इफ यू गेट एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, व्हाट हैपेंस, यहाँ जो साइनसेस रहते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने लगेंगी. तो उसमें साइनस के सिम्टम्स क्या रहते हैं? साइनोसाइटिस के सिम्टम्स ये है कि बहुत ज़्यादा हेडेक होगा. ओके, यू विल हैव फेशियल पेन. या तो कॉमनली उनको यहाँ पे पेन या यहाँ पे पेन अबाउट द आईब्रोज उनको पेन महसूस होगा. देन नेजल कंजेशन, रनी नोज, इचिंग महसूस होगा. या तो आंखों में या तो नाक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होगा, या तो थ्रोट इरिटेशन, कंटिन्यूस स्नीजिंग, स्लीपिंग डिफिकल्टी. जैसे वो सोने जाते हैं तो उनको स्टफीनेस महसूस होता है नाक में और वो उठ जाते हैं, उनको नींद प्रेशर फील होने लगता है फेस पे. एंड जो डिस्चार्जेस आते हैं नाक से वो है येलोइश म्यूकॉट डिस्चार्जेस आते हैं, बहुत गाढ़े डिस्चार्जेस. एंड हल्का हल्का हेडेक उनको होते रहेगा. ओके, सो बेसिकली इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर जो होता है साइनस का वो है डैम्प वेदर. ओके, कोल्ड वेदर, ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड. तो ये सारी चीज़ों से आप बचें, सो आप अपना साइनस अवॉइड कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉमन कंडीशन जो सर्दी खांसी के इसमें आता है, एंड जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, वो है एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं. एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है? जब आपका इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने बोला था, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस सिस्टम रहता है बॉडी का, अगर वो स्ट्रॉन्ग इनफ है तो वो ये डिफेंस सिस्टम हमको जो भी एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया जो भी आते हैं, इट गिव्स अस द पावर टू fight back or to keep our body safe from all these viruses and bacteria. Okay. But when you are allergic to something, it means that your immune system is trying to protect you from something that is not harmful, especially to pollens, to dust, to damp weather. So, because of or to certain kind of food items. So, because of this allergy kind of develops in every person. Now, allergic rhinitis होता क्या है? Allergic rhinitis is if you are experiencing a continuous or a paroxysmal episode, जैसे बोलते हैं, like you have continuous episodes of sneezing, severe sneezing episodes all throughout the day. Night time nasal congestion होता है. जैसे आप if you're going to sleep, then you will experience that all the nasal congestion, then this entire area is feeling very congested. Then you are experiencing itching of the eyes and of the nose, then rubbing of the eyes. Okay, then post nasal discharge, and because of the stuffed nose you have to breathe through the mouth. So this is allergic rhinitis. It is commonly seen in the monsoon season, and it occurs seasonally only. ऐसा नहीं है कि if you are having allergic rhinitis you will have it all throughout the year. There are different kind of allergic rhinitis. One type of allergic rhinitis is the seasonal allergic rhinitis. Seasonal allergic rhinitis, what happens that whenever that particular kind of season comes, you start developing those kind of symptoms. जैसे ज़्यादातर it affects people during the monsoon and in the winter season. Okay, the next which I want to talk about, ये सर्दी खांसी बहुत कॉमन है, but बहुत सारे मेरे यूजर्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे कि उनको उनके बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को बहुत सारा सर्दी खांसी है फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड बहुत हाई ग्रेड फीवर है. मैं सारे यूजर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी को भी आपके आजू बाजू हाई ग्रेड फीवर है या बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है या उनको डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में, तो उसको इग्नोर ना करें. ये कोई अलग बीमारी में डेवलप हो सकता है. द मेजर कॉमन डिजीज़ which is commonly which we see during the monsoon season is the different kind of pneumonias that we see in children. If a child is experiencing very high grade fever with a lot of cough, lot of sneezing, lot of stuffiness in the
stuffiness in the nose, difficulty in breathing. During breathing, if there are different kind of noises which you can hear, which is called as the wheezing. If your child is experiencing difficulty in breathing, uh, um, and all these symptoms have been prolonged for quite a long time, please do not ignore. It can turn into a disease called as the pneumonia. What is pneumonia? Pneumonia also is there are two types of pneumonia, that is bacterial pneumonia and you have viral pneumonia. Bacterial pneumonia, what happens because of the viruses and the bacteria which our body is unable to fight. Because of that, there is a lot of inflammation of the bronchial alveoli. Okay, so because of this, a lot of cough, a lot of congestion is in a form of patchy area is formed in the lung area. Because of that, it causes a lot of difficulty in breathing. If it is left untreated, if it is not treated at the right time, the person or the child may require a serious hospitalization. So please do not ignore these symptoms. Um, In pneumonia, you will experience very high grade fever with shaking, chills, shortness of breath, pain in the chest, decreased appetite, weakness, fatigue, and cough with a lot of phlegm. So please do not ignore the symptoms of pneumonia. Another common condition that we see that increases the symptoms in patients during monsoon season is the patients who are having asthma. Asthma also it causes an inflammation of the alveoli of the lungs, and because of that, whenever they are exposed to a damp weather or to a weather which is unfavorable to their body's defense mechanism, so they start developing these kind of symptoms. Now the symptoms would be a lot sudden. The attacks would be sudden, or it would be chronic. Sudden would be there will be suddenly they may find shortness of breath, difficulty in breathing, a lot of coughing. They have to gasp for breath. They start breathing through the mouth. Okay, they start breathing through the mouth, coughing. You will experience whistling sound while breathing. Then fast breathing, rapid breathing, and frequent colds that settle in the chest. Okay, so these are the symptoms of asthma that you need to look out for. The common allergens or the asthma symptoms that are triggered are because of the exposure to certain kind of allergens like pollens, animal dander, and dust, irritants like smoke, strong odors, or by extreme weather conditions. So, if any of your relative is having a condition called as the asthma, ask your relative to take special care during the monsoon season to avoid the frequent attacks of asthma. These are the airborne diseases which I mentioned. The next diseases which I want to mention is the foodborne or the waterborne diseases. Now, waterborne diseases which we commonly seen in the monsoon season is typhoid and jaundice. जैसे ये this topic is very vast, so I'm just emphasizing short on all the diseases which I can cover up during this session, and I will try and answer all your questions that are coming. Now, what is typhoid? During typhoid, typhoid is a condition which is spread usually because of contamination, because of the intake of the contaminated water or consuming contaminated water or food by the feces of the infected person, or walking along water puddles, drinking water from the food outlets. Okay, these are all they cause typhoid. Now, typhoid it is spread by a spread. The causative factor is called as the S. typhi, which is transmitted from consuming contaminated food or water with the feces of the infected person. The spread is usually spread because of the poor sanitation by contaminated water, direct contact with the infected person's urine. So this typhoid it develops from 1 to 3 weeks after the exposure with
exposure to the contaminated water or the contaminated person. The symptoms would be there will be very high grade fever. The person will experience fever of around 103 to 104. There will be a lot of abdominal pain. The patient will experience watery diarrhea. बार बार उसको मोशन पास करने जाना पड़ेगा, लूज मोशंस, headache, sore throat, weakness and a little kind of rash. So ये जो टाइफाइड के सिम्टम्स रहते हैं ये यूजुअली 3 weeks के बाद डेवलप होते हैं. एंड टाइफाइड टेस्ट which is available that is usually confirmed after the second week of the illness. Okay, so typhoid is one condition. The second condition, that is foodborne or waterborne, that we commonly see during the monsoon season, is jaundice. So everybody, I hope, is well aware that jaundice also is a waterborne and a foodborne disease. When a person is consumes water or food that is contaminated, by the infected person's feces or urine, so the person develops jaundice. So jaundice, what are the symptoms? The patient will experience a lot of abdominal pain. There is loss of appetite. There will be yellowish discoloration of the sclera. Sclera मतलब आँख थोड़े पीले हो जाते हैं. Yellowish discoloration of the skin. There will be high colored or dark colored urine. There will be severe abdominal pain. Okay, abdominal pain, there will be vomiting, nausea. ये सारे episodes that they all occur in jaundice. The very common illnesses, जो fever topic I'm going to touch now. The two commonest diseases that are more prone during the season is dengue and malaria. Dengue and malaria. About malaria, I want to say malaria is a disease that is also a disease that is spread by because of the it is a mosquito-borne disease which is spread because of the bite of the female Anopheles mosquito. Now, malaria, the symptoms would be very high grade fever, okay, with a lot of chills, bone pains, then muscle pain, bone pain, muscle pain, loss of appetite, okay, abdominal pain, and severe kind of headache. So malaria usually it is most common during this area. During this monsoon season. Another most common type of disease that we are dealing nowadays is dengue fever. Dengue fever is also a mosquito spread fever, and this fever is spread because of the bite of Aedes mosquito. Okay, in dengue there will be a lot of there will be a high grade fever with or without chills. There will be a lot of headache. There will be pallor which is experienced. Patient बहुत ऐसे pale दिखने लगेगा. There will be sore throat. Then the patient will experience rash or itching all in the body on the third day of fever, and bone pains and muscle pains, decrease in appetite and a lot of fatigue. Both these conditions, they are self limited. As the disease starts, after the third or the fourth day, the symptoms reduce automatically. But if the fever is very high, the patient needs special assistance and special treatment. If the patient is not in a proper condition, कि उसको वो फीवर नहीं झेल पा रहा है या बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है, so you need to go and consult your doctor as soon as possible, because if the seriousness of the illness increases, the patient might require hospitalization, especially in dengue fevers. So you need to take special kind of care. Now, what kind of prevention for बहुत सारे users ने मुझे questions भेजे थे that what preventive measures can we take during the monsoon season? Now, during monsoon season, as I can say, monsoon ऐसा season है जिसमें बहुत सारा बारिश होता है, बहुत सारा पानी जम जाता है सारी चीज़ों पे. तो हमको सबसे ज़्यादा यही केयर लेना है कि कहीं पे भी अगर हम पानी
स्टोर करके रख रहे हैं, that you should not stagnate water anywhere. Avoid a stagnation of water or storing of water. If you're storing water, please clean it every 2 days. Don't keep the water stagnated for a very long time, because this allows the breeding of a lot of mosquitoes, and if there are a lot of mosquitoes, you might be prone to mosquito borne fever, that is malaria and dengue, which is commonly spread nowadays. So this is the most important thing. Secondly, maintaining your personal sanitation, personal hygiene you need to maintain. If you are not maintaining a personal hygiene, like having bath with warm water, keeping your entire body clean, okay, don't wear damp moist clothes, because that also leads to development a lot of fungal infections in the body. मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जैसे हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, वैसे हमें अपने आजू बाजू का एनवायरमेंट या हमारे आजू बाजू के एरिया को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. इफ़ बिकॉज if our surrounding is clean, if our surrounding is kept dirty, so that will attract a lot of flies, a lot of mosquitoes, which will go and sit on our food, and that will cause into a lot of foodborne and waterborne diseases. So maintaining a good environmental hygiene is important. Okay, wash your hands regularly with a good detergent. Make sure that you don't eat or eat any foodstuffs with contaminated hands. Preventive medication can be given in children and with wheezing, so that severe episodes are reduced, especially in children who are more prone to asthmas or bronchitis conditions. So these children can be given preventive measures so that the severe episodes can be a bit controlled. Clean, you need to have clean drinking water, or I would advise. Especially, it is better to have to drink boiled water. Always eat hot and freshly cooked food. Try and avoid eating food on the roadside. Try and avoid eating too much oily or spicy food. Okay. Always stay a lot of hydrated. In case if you're traveling, try and wear long sleeved clothes and long pants. Avoid wearing dark colored clothes, because these attract a lot of mosquitoes towards you, and that may lead to different kind of illnesses or skin rash. Okay, that's all for today. I've just taken a little gist about the entire topic, or the different conditions that we experience during the monsoon season. Now I will try and answer all your questions that you all have sent me. Okay, Dikshita Sharma. She writes, मैम मेरा बच्चा 3 तारीख को 5 मंथ स्टार्ट हुआ. मेरे बच्चे को सर्दी और कफ बहुत जल्दी होता है, क्या करूँ? दवा ले तब तक फिर वापस हो जाता है. Okay, so वेट 5 किलो 200 ग्राम है, सही है या कम है? बोने के टाइम 2 किलो बॉर्न के टाइम 2 किलो 600 ग्राम था. Okay, Dikshita Sharma ji, as first I will talk about your weight of your child. As you said, the weight of your child as it was born was 2 kilo 600 grams, and as your child is 5 months old, the weight according to me is fine, not bad. Um, 5 kgs gain in 5 months is fine. It is proper. Secondly, as you're saying that since 3 days, huh,
जैसे आपके बच्चे को बार-बार सर्दी खाँसी हो रही है एंड आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो आप प्लीज़ आपके पीडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए बच्चे को, बिकॉज़ बार-बार सर्दी खाँसी होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। या तो अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खाँसी बार-बार होता है, तो आप अपने बच्चे को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है एंड उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं रहता है। एंड अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये एज में उसके लिए स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो टेंडेंसी है उसकी बार-बार सर्दी होना, वो स्टॉप हो सकती है। शफ़ीक शेख, मेरी बीवी को सर्दी हो गया है। शफ़ीक शेख जी, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ये मानसून सीज़न में अगर उनको सर्दी हो गया है, जैसे मैंने मेंशन किया था कि उनको बोलिए सारे प्रिकॉशंस लें, तो उनको सर्दी नहीं, थोड़े ठंडी चीज़ें अवॉइड करें। दीपाली शिवसागर, मेरे बच्चे को 11 तारीख एक 11 तारीख 1 मंथ कंप्लीट हो गया होगा, उसको सर्दी 8 दिन से है, क्या करें? दीपाली जी, आपके बच्चे को आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, सो आपको सिर्फ़ 1 महीने का है, सो आपको स्पेशल केयर लेना है। स्पेशली आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपको सर्दी है, आपको थोड़ी भी सर्दी-खाँसी हो रही है, तो आप अपने बच्चे के पास 1-2 दिन के लिए ना जाएँ। अगर जाना ही पड़े तो ट्राई एंड अवॉइड कि अगर नोज़ वाटर वगैरह कर रहा है, तो वही हाथों से आप अपने बच्चे को टच ना करें। स्पेशली उसके मुँह के पास ना जाए, बिकॉज़ अगर आपको सर्दी होगी तो जैसे कॉमन कोल्ड एयरबॉर्न डिज़ीज़ है, तो उसको सर्दी होगी। जैसे उसको 8 दिन से सर्दी है, तो काफ़ी आपका बच्चा छोटा है, तो ये सारे सिम्पटम्स आप अवॉइड मत करिए। आप आपके बच्चे के डॉक्टर को आप जल्दी से जल्दी दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए। अ, गौरी जोशी गौरी जोशी राइट्स, मेरी बेटी को रनिंग नोज और स्नीज हो रहा है, प्लीज सजेस्ट द मेडिसिन। ओके, गौरी जोशी, एज योर आपकी बेटी को जैसे रनिंग नोज और स्नीजिंग है, जैसे मैंने मेंशन किया था, ये कॉमन कोल्ड की शिकायत हो सकती है। अगर उसको ज़्यादा तकलीफें नहीं है तो आप उसको, अगर आपकी बेटी बड़ी है तो आप उसको थोड़ा स्टीम इनहेलेशन एडवाइस कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, या तो उसको गर्म पानी पीने दे दीजिए। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, वो अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ही रनिंग नोज़ और स्नीज़िंग है, तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए, या तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर ले सकते हैं। ओके, राम प्रसाद जी लिखते हैं, मेरे बेबी 20 दिन का है, उसे हिचकी बहुत आती है और जब सोता है तो अचानक डर कर उठ जाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राम प्रसाद जी, जैसे आपका बच्चा सिर्फ 20 दिन का है, तो हिचकी आना ये भी एक कॉमन है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही है तो प्लीज़ उसको डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए। लेकिन अगर थोड़ी-थोड़ी बीच-बीच में अगर वो हिचकी लेता है, तो ये बहुत कॉमन है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन का बच्चा है, तो क्या होता है, उनका डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। तो जैसे वो दूध पी रहे हैं, तो अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर उनका बर्पिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो वो उनको हिचकियाँ आएगी, बिकॉज़ जो दूध पीते हैं उसमें थोड़ा एयर जाता है, एयर की वज़ह से हिचकियाँ आती है। बट अगर बहुत ज़्यादा आती है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर वो अचानक डर के उठ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ऐसे मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बच्चे को एग्ज़ामिन करने नहीं मिल रहा है, तो अ, अगर आपको लग रहा है वो बहुत ज़्यादा डर के उठ रहा है, सिवियरिटी ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप जाके डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। ओके।
Okay, Mahesh Ghiloria writes, Hi Dr. Dipti, my son is 6 years old. Generally, he had cough and cold. What should I do? Okay, your son is just 6 years old, so it is common because during this age group, as they go out and they get wet in the rains, they have cold food, cold drinks, they tend to catch cold and cough. So if your son is fine, just give him warm water. Uh, as other preventive measures, which I had told you, that ask him to maintain a good personal hygiene. If there is a lot of cough and cold, you can surely start homeopathic treatment for him, because for children homeopathic treatment during monsoon season is very good. बहुत ज़्यादा effective होता है, and all the repeated episodes whichever the child is experiencing, that also reduces. So you can start with that. And मौसमी दास राइट्स, पीसीवी वैक्सीन से कोल्ड कॉफ से रिलीफ दिला सकता है। 4 मंथ के बेबी को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वैक्सीन ज़रूरी है? पीसीवी वैक्सीन नॉर्मल कोल्ड एंड कॉफ को प्रिवेंट नहीं करेगा। पीसीवी वैक्सीन बेसिकली अगर उसको बहुत ज़्यादा सिवियरिटी में कोई डिजीज आ सकता है, कोई एपिडेमिक आ गया, तो उससे प्रोटेक्ट करेगा। बट नॉर्मल अगर उसको सर्दी खांसी है, अगर वो कोई एनवायरनमेंट में गया है या और किसी को सर्दी खांसी है जिससे वो बच्चा एक्सपोज हो रहा है, तो उसको नॉर्मल सर्दी खांसी होगी। नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए आपको उसको वैक्सीनेशन देने की जरूरी नहीं है। बट ये पीसीवी जो वैक्सीन रहता है वो आजकल वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ गया है। सो आई थिंक it is there is no harm in giving the vaccine, but it won't prevent, or it won't give relief from a cold and cough, and it won't be that your child is protected against cold and cough. सिद्धेश्वर फर्ड, मेरी बीवी को सर्दी और खांसी 2 दिन से हो गई है, उसकी बहुत परेशानी हो रही है। सिद्धेश्वर जी, आप अपनी बीवी को 2 दिन से जो सर्दी खांसी हो गई है ना, तो उसको कृपया इग्नोर ना करिए, और आप जल्दी से जल्दी उसको नज़दीकी डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए और इलाज करवा के ले लीजिए। ओके, सौरभ श्रीवास्तव राइट्स, मैडम मेरी बेबी 5 मंथ कंप्लीट होने जा रहा है, एंड इस समय उसका सर हेड थोड़ा सा गर्म रहता है अकॉर्डिंग टू ऑल बॉडी, एंड सोते में हल्की सी खांसी आती है और लूज सा रहता है। सौरभ श्रीवास्तव जी, as your baby is just 5 months old, सो सर हमेशा ये पार्ट गर्म रहना बच्चे का एज कम्पेयर टू द एंटायर बॉडी इज कॉमन, सो डोंट वरी। हल्का गर्म सर बच्चों में रहता ही है। अगर उसको हल्की हल्की सर्दी खांसी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को जाके दिखा सकते हो, बट सर जो गर्म रहता है वो कॉमन है। मेरी बेटी 3 साल की है, उसे साल के 10 महीने कोल्ड एंड कफ रहता है, क्या करूं? पल्लवी जी, आपके आपका आपके आपकी जो परेशानी है उसका एक ही उपाय है। आपकी जो बेटी है 3 साल की है, उसको अगर बार बार इतनी ज्यादा सर्दी खांसी हो रही है, मतलब उसकी इम्यूनिटी, उसका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा कमजोर है, एंड उसके लिए मैं ये एक ही एडवाइस करूंगी कि आप प्रॉपरली एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उसको अभी से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, बिकॉज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जो भी टेंडेंसीज रहते हैं, अगर वो एलर्जिक है कोई चीज़ के लिए जो जिससे उसको बार बार सर्दी हो रही है,
वो एलर्जीज वो कम करेंगी और उसको उसकी डिफेंस मैकेनिज्म होम्योपैथी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। एंड प्लस बच्चों के लिए होम्योपैथी कम्प्लीटली सेफ है बिकॉज बच्चों को बिकॉज होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके बच्चे के लिए ज़रूर स्टार्ट करिए बिकॉज बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। रेखा रानी जी, हेलो मैम, मेरी बेटी 8 मंथ की है, उसे बहुत सर्दी खांसी और जुकाम है, क्या करूं? रेखा रानी जी, बच्चों को ये मौसम में सर्दी खांसी होती है। अगर उसकी सिवियरिटी ज़्यादा है तो प्लीज़ आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन को जाके दिखा दीजिए। यामी देवरा, मेरी बेटी 5 मंथ की है, उसका हेड हल्का गर्म रहता है। यामी देवरा जी, आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों में एक 6 महीने तक सर हमेशा हल्का गर्म रहता ही है एज कम्पेयर टू द एंटायर बॉडी। सो डोंट वरी, इट इज नॉर्मल। अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा है एज कम्पेयर टू द एंटायर बॉडी, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके एडवाइस ले सकते हैं। भक्ति पटेल, कोल्ड एंड कफ ड्यूरिंग मानसून में क्या करना चाहिए? भक्ति पटेल जी, मैंने जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं कि वो आप फॉलो करिए। इट विल श्योरली हेल्प you during the monsoon season, because monsoon season is such season that you are exposed to a lot of bacteria and viruses. So to prevent that, as I had told you in the entire session, the preventive measures you can follow that. जतिंदर कौर, हेलो मैम, मेरी बेबी को 22 जुलाई को 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बेबी जब पॉटी और वॉमिटिंग करती है तो उसमें रैशेज जैसे चिपचिपा सा आता है। प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी अपनी बेबी को, बट डॉक्टर ने कोई भी मेडिसिन नहीं दी। कहते बच्चे ऐसे ही करते हैं, बट उसे कफ सा रहता है। प्लीज सजेस्ट मी, मैं बेबी को कफ से रिलीव कैसे करूं? जतिंदर कौर जी, जैसे आपने बताया है कि आपकी बेबी को 6 महीने की है एंड उसके स्टूल्स में या वॉमिटिंग में थोड़ा चिपचिपा सा रहता है। स्टूल्स में एक 6 महीने तक चिपचिपापन आना कॉमन है, तो उसके लिए यू नीड नॉट टू वरी। बट वॉमिटिंग में थोड़ा चिपचिपा, थोड़ा दही जैसा बच्चे निकाल लेते हैं, वो भी कॉमन है, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया था। बट अगर उसको सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप आपके जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनको जाके बता दीजिए कि उसको खांस रहा है। अगर आपका ये मानना है कि आप उसे रिलीफ सर्दी खांसी से तभी दे सकते हैं जब उसके स्टूल या वॉमिटिंग में कफ निकले, तो ऐसा ये मिथ है। ऐसा नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल उसके चेस्ट एग्जामिनेशन में कफ डॉक्टर को फील हो रहा है कि चेस्ट कंजेस्टेड है या चेस्ट में बहुत सारा कफ जमा है या बच्चा बहुत ज़्यादा खांस रहा है, चीख रहा है, तो ही मेडिसिन की ज़रूरत रहती है। सिर्फ ये स्टूल और वॉमिटिंग का जो चिपचिपापन है उसके लिए आप प्लीज़ टेंशन ना लें। बानी जैसिंग, होम रेमेडीज फॉर कफ एंड कोल्ड फॉर अ 3 month-old बेबी। Okay, the only home remedies I can give for cold and cough, okay, Bani Jaisinghani, I just want to advise you, as see, babies are very small, they are unable to tell us what kind of symptoms or what kind of problems they're experiencing, or whatever is happening to them. So for me, experimenting home remedies on small babies is not favorable. It is not good because you will not be able to estimate what kind of effect it is giving. Whatever kind of home remedies which are available for cold and cough, that are not that can't be advised to give for a very small baby of 3 month old.
I would advise, if the baby is having a lot of cold and cough, if you're not willing to go for allopathic treatment, or you're not willing to give your baby antibiotics, you can go for homeopathic treatment. It is completely holistic method of treatment. It has no side effects. Your baby will be absolutely fine, and it is not as heavy as the severe antibiotics, and the severe cold and cough which a baby is experiencing will be completely resolved. So home remedies, I would suggest for a small baby, should not be given. लुगना तबस्सुम, मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा जकड़ने और खांसी हो रही है, जिसका मेरे बच्चे पर भी हो गया है। प्लीज़ मुझे कोई घरेलू उपचार बताइए। लुबना जी, पहले मैं पूछना चाहती हूँ, आपको सर्दी खांसी या जो ज़्यादा जकड़ना आप बोल रहे हो, मतलब फीवर आप बता रहे हो, वो कितने दिन से है? अगर वो बहुत ज़्यादा दिन से है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ले लीजिए। बिकॉज अगर आपको सर्दी खांसी रहेगी और अगर आप घरेलू उपचार करने लगेंगे तो आप अपने बच्चे के पास जाएंगे तो आपके बच्चे की भी तकलीफें पड़ेंगी। तो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉपर, इंस्टेड ऑफ घरेलू उपचार, आप कोई अच्छे डॉक्टर को जाके आप खुद को दिखा दीजिए, नहीं तो आपका बच्चा भी और बीमार पड़ जाएगा, बिकॉज आप वही वायरसेस या बैक्टीरिया अपने बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैम, मेरा बेटे को भी सर्दी हो गया है, कोई उपाय बता दीजिए। ज्योति, मेरा बेटा 7 मंथ का हो गया है, उसके दांत निकल रहे हैं, उसको पॉटी हो रही है, प्लीज कोई दवा बताइए और मैं उसको खाने में क्या दूँ जिससे वो कमजोरी महसूस ना करे। ज्योति जी, अगर उसको इसे डेंटिशनल डायरिया बोलते हैं, जैसे ही दांत आने लगते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस या स्टिकी मोशंस एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट या एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं देना है तो द बेस्ट एडवाइस ट्रीटमेंट वुड बी होम्योपैथी, बिकॉज जो भी डेंटेशनल डायरिया होता है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व होता है, एंड जिसकी वजह से जो बच्चा कमजोरी महसूस करता है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। Okay, Sakshi writes, can homeopathy medicines be taken without any prescription? Are they safe as advertised? They do not have side effects. There are medicines in market which have their dosage written on it. Okay, Sakshi, I would, the answer to this is, see, homeopathic medicines are not medicines like allopathic medicines that you can just go in a pharmacy or a chemist and just buy and take. Homeopathic medicines are specific medicines which are given as considering the entire patient's history or the entire patient as a person. Okay, so even if you're getting those homeopathic medicines in market which has the written dosage on it, but you should be convinced there are a lot of remedies which cover up the similar symptoms. So even if you take, it won't have any side effects. But if you want complete cure, or you want all your symptoms to be treated from the root cause, you need to go and consult a proper homeopathic physician, because just going and buying medicines without any prescription in homeopathy is not favorable, because whatever are your symptoms, it won't be covered by the proper medicine and you will keep on taking medicines. It doesn't have side effects, but there are if the medicine is not favorable to the symptoms that you are having, your symptoms might aggravate or it might increase. So it is better that you go and consult a homeopathic doctor and take a written prescription and start the treatment accordingly. आज डॉक्टर से दिखाया, मेरी बीवी को सर्दी है और आज सुबह से लैट्रिन हो रहा है। आज डॉक्टर से दिखाया तो वो आए, 2 बोतल पानी चढ़ाए हैं। एमडी परवेज जी, आपकी जो बीवी को सर्दी है और सुबह से लैट्रिन हो रहा है, तो अगर उनके लूज मोशंस बहुत ज़्यादा है, अगर उनको फीवर भी आ रहा है उसके साथ साथ, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ डॉक्टर से जाके ब्लड टेस्ट करवा के ले लीजिए। ये कोई फूड बॉर्न डिजीज़ हो सकता है, जैसे कि जॉन्डिस की शुरुआत हो सकती है, या तो
टाइफाइड की शुरुआत हो सकती है। अगर उनका फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं तो प्लीज़ जाके अच्छे डॉक्टर से जाके इलाज करवा लीजिए, इसको इग्नोर ना करें। Hello, ma'am. My Vaishali Naik. Hello, ma'am. My son, 7 month son, is always getting prone to cold and cough since when he was 3 months. Almost every month he is suffering. Sounds come from nose. What can be reason and how can I avoid that? Okay, Vaishali Naik, your 7 month old son is prone to cold and cough since 3 months. So I think he might be allergic to certain kind of certain things which increases his cold and cough. Every month he's suffering, so that means definitely his immunity, his defense system is being affected. So for your child, I would really advise you can go and take a proper homeopathic treatment from your nearest homeopathic doctor, and your problem would be really solved. And the sounds that are coming from the nose means he might be having a little kind of stuffy nose, which while breathing produces a little kind of sound because he is getting a little problem while breathing. So every month as he is getting the regular episodes of cold and cough, by proper homeopathic treatment it can be completely resolved. मुझे 8 मंथ का बॉय है, मेरा दूध पीता है तो उसको भी खांसी असर दी है, उसका दवा चालू है। मुझे 1 मंथ खांसी है, मुझे टीबी बीमारी तो नहीं हो गई, ना दवा करी हूँ पर आराम नहीं मिल रहा मुझे। बेबी ही है, वो मेरा दूध पीता है, बेबी उसे भी खांसी सर्दी है, उसका भी दवा चालू है, प्लीज रिप्लाई। ओके नंदिता गुप्ता जी, आपको 1 महीने से खांसी है, सो आई थिंक यू शुड, आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से जाके प्रॉपरली इलाज करवाना चाहिए। आपको जैसे 1 मंथ से खांसी है, मैं एडवाइस करूंगी आप एक चेस्ट एक्सरे करवा के ले लीजिए एंड रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट करवा के ले लीजिए टू रूल आउट कि अगर आपको जो भी आपको तकलीफें हैं वो जैसे आपके दिमाग में डाउट है कि वो टीबी है या नहीं, तो वो पूरा रूल आउट हो जाएगा। सेकेंडली अगर 1 महीने से आपको सर्दी खांसी है तो अगर उसके साथ साथ आपको बुखार भी आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। जितना टाइम तक आपको सर्दी खांसी रहेगी, आप जैसे बच्चे को दूध पिला रहे हो तो उसके वजह से आपके बच्चे को भी बार बार सर्दी खांसी होती रहेगी। तो आप अगर 1-2 महीने 1-2 दिन उसको दूध ना पिलाए, वो एडवाइस रहेगा, और वही 1-2 दिन में आप प्लीज डॉक्टर के पास जाके प्रॉपरली इलाज जांच करवा के ट्रीटमेंट ले लीजिए, बिकॉज 1 महीने से सर्दी खांसी होना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर, वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। डीके जादू, डॉक्टर मेरा बेटा कल बरसात में नहा लिया है, रात से बुखार खांसी और जुकाम बहुत ज्यादा है, श्वास लेने में परेशानी हो रही है, आयु 2.5 years। ओके डीके जादू जी, आपका बच्चा जैसे मैंने बताया था ये कॉमन कोल्ड की शिकायत है, वायरल फीवर रहेगा। जैसे ही वो बारिश में चला गया तो वो वायरस की वजह से उसको सर्दी खांसी हो गई है। नो नीड टू वरी, सिर्फ उसको बेसिक जो ट्रीटमेंट रहता है कि बुखार का जो दवा रहता है वो आप दे सकते हो, और उसको आराम आराम करने बोलिए, उसको गर्म पानी भी दे दीजिए, गर्म पानी पीने दे दीजिए, उसकी तकलीफें कम हो जाएंगी। लेकिन अगर उसको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर को जाके दिखा सकते हो। एंड अगर इतना डिफिकल्टी हो रहा है सांस लेने में तो नेबुलाइजेशन दे सकते हो, जैसे बाफ बोलते हैं, तो वो आप दे सकते हो अपने बच्चे को। ओके Okay, so here we end with our session. I hope today's session was really informative to all my users, and I hope I've helped a lot of users solve all their problems and answered all your questions. Please be safe during the rainy season. Rains are really beautiful. Rains are really wonderful to experience, but
Please be safe, and please be safe from all the illnesses. Enjoy the rains, but avoid getting sick and spoiling the real beautiful weather outside. Thank you.